सो लेट्स प्ले द गेम। मैं हूँ टफ और आज हम फिर से खेलेंगे हिटमैन 3 और आज का मिशन होने वाला है डेथ इन द फैमिली। तो देखते हैं कैसा रहता है ये पूरा मिशन हिटमैन 3 का। कोई जंगल टाइप लग रहा है। She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. तो मिशन कुछ इस तरीके से है कि कार्लाइल नाम से एक लेडी है जिसे हमें किल करना है और ये कह रहे थे कि इनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने ओपियम वॉर के टाइम पे न्यूज़पेपर और रेलवेज़ का बहुत बड़ा काम करा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं और इनके ग्रैंडफादर ने ही प्रोविडेंस की बुनियाद डाली है और ये अब भी प्रोविडेंस से जुड़ी हुई है और इनके पास एक केस फाइल है जिसमें कॉन्स्टेंट जो कि प्रोविडेंस का हेड है उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो दोनों चीज़ें हमें करनी है और देखते हैं मिशन में आगे क्या है। The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. तो इनके घर का नाम है थॉर्नब्रिज मैनर, जहाँ पर इनके जनरेशन टू जनरेशन कार्लाइल लोग रहते हुए आ रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं मेंशन के अंदर। तो एंट्री का सीन कुछ इस तरीके से रहेगा कि इन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर किसी काम से बुलाया है, तो हम एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन के जाएंगे अंदर मेंशन के। That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator. और एक थोड़ा अजीब सीन ये भी है कि यहाँ पर जो आज फंक्शन होने जा रहा है या फिर एक जो सेरेमनी होने वाली है वो कार्लाइल की फ्यूनरल की है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके काफ़ी दुश्मन हैं तो लोगों को लगे कि वो मर गई है, लेकिन वो एक्चुअल में ज़िंदा है। और इन्वेस्टिगेटर को किस काम से बुलाया है वो अभी पता चलेगा। ऊपर दिखा रहा है टॉक टू द बटलर, तो अभी हम लोग अंदर जाके बटलर से बात करेंगे कि क्या है पूरे घर का सीन। You must be Mr. Whitmer. Madame Carlyle has asked me to be of assistance to you. I trust you've had a good look around.
Are you ready to see the crime scene now? I am. Very well. If you'll follow me, sir. तो कोई क्राइम सीन हुआ है तो उसी को फॉलो करते हुए हमें ऊपर किसी कमरे में जाना है। I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madam's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. तो यहाँ पर समझा रहा है बटलर कि हमें किसी को बताना नहीं है कि कार्लाइल अभी तक जिंदा है। I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary. For centuries, the Carlyles have fought to prosper. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room. To my right. तो यहाँ पर पता चलता है कि जैकरी नाम से एक बंदा है जो कि कार्लाइल का भाई है, जो सामने भी पड़ा हुआ है। Why don't you use your camera to scan the dead body? ये कल रात मर गया था, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि इसने खुदकुशी करी है कि इसको मर्डर करा गया है, ये मालूम करने के लिए हमें कार्लाइल ने हमें यहाँ पे बुलाया है। Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. तो यहाँ पर हम लोगों ने जैकरी का रूम पूरा खंगाल लिया है और जो भी हमें क्लूज मिलने थे वो मिल गए। अब हमें दोबारा जाना है बटलर के पास बात करने कि हमने पूरी तरीके से कमरे को इन्वेस्टिगेट कर लिया है। तो अब आगे क्या सीन है देखते हैं। Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. This is very useful information, 47. Did you get that budget off from So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer search? तो यहाँ पर बटलर ने हमसे ये कहा है कि अपनी मर्जी से हम इन्वेस्टिगेशन जितनी चाहें कर सकते हैं और जब हम कंक्लूजन पे पहुँच जाएं तो दोबारा हमें जाना है बटलर के पास, फिर वो हमें लेके जाएगा कार्लाइल के पास और वहाँ पर फिर होगी आगे की बात। और जब हमें सही मौका मिलेगा तो हम कार्लाइल को भी मार देंगे और हमें फाइल जो सिक्योर करनी है कॉन्स्टेंट के बारे में वो भी कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर लेंगे उस फाइल का भी। तो अभी हम लोग अंदर इसलिए यहाँ पर आए थे, यहाँ पे क्रोबार जो है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्रोबार तो मिल गई है, अब अंदर ग्रीन हाउस जो है इसके अंदर देखते हैं कोई हमें क्लू मिल जाए। तो एक तो ये चाबी मिली है किसी बोट की Broken lab equipment. It और ये looks like कोई it was recently जहर वाला used, मुझे फूल लग रहा है। though. कैमरे से करते हैं इसे स्कैन। This is a table showing lethal dosages for the poison used to kill Zachary. Something is circled, 47. Female, age 65 to 79.
60 to 64 kilograms. I'd say Madame तो यहाँ पर बुक Carlyle में is ये लिखा next था in कि line वो for a poisoning. जहर इसी लैब में बनाया गया था जिससे जैकरी को मारा गया था। और यहाँ पर कुछ फुट स्टेप हैं किसी के। अब हमें यहाँ से चलना है सीधा बटलर के रूम में और वहाँ पे करना है आगे की इन्वेस्टिगेशन। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। स्टाफ रूम। अगर यार मैं पूरा ओवरऑल मिशन बताऊं तो मिशन कुछ इस तरीके से है कि हमें घर में जो मर्डर हुआ है उसे करना है सॉल्व, और उसको सॉल्व करने के बाद बटलर लेके जाएगा हमें कार्लाइल के पास, और कार्लाइल से हम उसके अगेंस्ट में मांग लेंगे वो केस फाइल, और जब केस फाइल मिल जाएगी तो हम उसे एलेक्सा कार्लाइल को किल कर देंगे और वहाँ से शांति से निकल जाएंगे। Zachary's diary. This is big. He was तो about यहाँ to पर हमें confess to the जैकरी की world डायरी मिली है that he बटलर and के कमरे Alexa में, तो murdered ये their भी older एक brother पॉइंट हो Montgomery सकता है। 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Painkillers. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler, 47? Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. तो अब हम कर रहे हैं फ्रेम इस बटलर को, क्योंकि उसके कमरे से मिला हमें एक पॉइजन की बोतल, और दूसरी चीज़ जो हमें मिली वो मिली जैकरी की डायरी, वो भी बटलर के कमरे में, जिसमें लिखा था 40 साल पहले कैसे एलेक्सा कार्लाइल और जैकरी ने मिलकर अपने बड़े भाई को किल करा था और उसे छुपाने का काम करा था इस बटलर ने। तो अभी अंदर जाके हम इसी बटलर को फ्रेम करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या रहता है। Please step inside. Your detective skills have gained you access to the Lion's Den, 47. Now, go claim your reward. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat. Please, go ahead. The butler, Mr. Fernsby, killed तो जब Zachary. यहाँ पर हम एलेक्सा को बताएंगे कि जैकरी को मारने वाला बटलर है, तो वो कहेगी कि अगर ये बात बाहर चली गई तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी पूरे मेंशन की, तो इसलिए वो कहेगी हमसे कि जो भी आपको इसके अगेंस्ट में चाहिए वो हमें बता दो। तो यहाँ पर हम लोग मांग लेंगे इससे Have फाइल, you considered an amount? कांस्टेंट की इन्फॉर्मेशन की I फाइल। want the file you have on Arthur Edwards. Arthur Edwards, the Constant. But that must mean you're... I expected you'd show up. But you're not here to kill me. If you were, you would have already. The enemy of my enemy, I suppose. You can have it. You earned it. तो यहाँ पर हमें मिलने जा रही है आर्थर एडवर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि कांस्टेंट है इस फाइल के अंदर। Good hunting. I need some privacy. अब यहाँ से जल्दी से फाइल लेते हैं और फिर मारते हैं एलेक्सा कार्लाइल को, और फिर यहाँ से निकलते हैं और करते हैं मिशन को जल्दी से Good work, कंप्लीट। 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. तो एलेक्सा कार्लाइल मर गई बे Mission यार। complete. Well done, बॉडी 47. फाउंड। दिक्कत ना हो जाए क्योंकि मैंने सेव भी नहीं करा था। निकलते हैं जल्दी से यहाँ से। मुझे लगा पकड़ ना जाए यार, अब क्योंकि कॉम्बैट चल रहा है। हॉन्टेड हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी। Don't let him take control of the situation. Over. निकलो भाई जल्दी से। अबे यार देख लिया शायद, मुझे लग रहा है ऊपर चल के इसे मारें कि यहाँ से निकल जाएं। Free to engage. He's not here. Anyone got a visual on चलो Tango? भागते हैं यहाँ से जल्दी से। Command, you've
यहाँ पर अगर मिशन फेल हुआ तो पूरा मिशन दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेव करना इस बार पता नहीं क्यों भूल गया। वो फ्लो में इतना सही गेम चल रहा था, मुझे गोली से मारना चाहिए था, जो मैंने गला घोट के मारा है वो नहीं करना था। लेकिन चलो देखते हैं, अभी जान बाकी है। तो यहाँ पाइप मिल गया है, तो जल्दी चलते हैं नीचे। अबे यार फिर से राइट में जाऊँ कि लेफ़्ट में? एग्ज़िट तो दिखा रहा है लेफ़्ट में, तो लेफ़्ट में चलते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन आ गई है। अबे यार ये देख ना ले, थोड़ा सा ध्यान से जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल मूवी वाला सीन लग रहा है यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर, आवाज़ ना पहुंच जाए उसे। चलो नहीं पहुंची, चलते हैं हम जल्दी से नीचे। तो मिशन हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। और जाने से पहले मैं एक बात कहूँगा, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और कमेंट हो सके तो कमेंट भी करना। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, पूरी मूवी मिस्ट्री वाली वाइब थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मिशन के साथ, हिटमैन 3 के। टिल देन